हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लैम बाय अनु सैनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये मेकअप लुक, स्मोकी आई लुक। So I am done with my cleansing and toning, and next I'm going to use this Cetaphil का moisturizer. Now time for primer. This is the primer I'm using, this Basis Canada. Setting it using loose powder. नेक्स्ट जो पैलेट हम यूज करने जा रहे हैं डेट इज दिस स्विस ब्यूटी प्रो नियॉन मास्टर ब्रश। एंड डू द ब्लेंडिंग। दूसरा ब्रश यूज करेंगे। टू क्रिएट दैट depth. And just do the blending. अब मैं एक ब्लैक कलर लेने जा रही हूँ एंड ब्लेंडिंग इट। ये ब्रश using 303. I'm using this orange color corrector. Around the lips and blend it using this beauty blender. सो ये हो गया हमारी कलर करेक्शन। नेक्स्ट मैं यूज़ करने जा रही हूँ फाउंडेशन, फॉरएवर 52 की फाउंडेशन। लूज पाउडर यूज करने के बाद आई एम यूजिंग दिस आईब्रो पेंसिल, जस्ट fill in the gaps.
तो ये होगी हमारी लोअर लैश डन। हम करेंगे हाईलाइट अपने ब्राउ बोन को। नेक्स्ट करते हैं कंटूर। इस ब्यूटी के पैलेट में ही मैंने हाइलाइटर लिया था, दिस वन एंड इसी में से ये ब्राउन कलर से मैं करने जा रही हूँ कंटूरिंग। इस कंटूरिंग के लिए आई एम यूजिंग दिस मियोन का ब्रश। So we are done with our contouring and ये डबल चिन है मेरे, यू कैन सी। इसको करेंगे फिक्स, थोड़ा सा यहाँ से कट करेंगे। Next is time for blush on. Same Swiss Beauty का palette I'm using. Highlight. Outlining my lips using this Swiss Beauty का liner. कलर क्लीन करके ऐसे इसके ऊपर कुछ मेंशन है, यू कैन सी। स्विस ब्यूटी लिप ग्लॉस, काफ़ी प्रोडक्ट मैंने स्विस ब्यूटी के यूज़ किए, काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है इनकी प्रोडक्ट। अब हम करेंगे अपनी आईलैश को कर्ल। सारा आई एम यूजिंग दिस डेली लाइफ फॉरएवर 52 एक्सेल लैश मस्कारा। अब करेंगे हाइलाइटिंग। So that's it. This is my final finished look, you guys.